Zechariah. ज़करिया की पुस्तक The book of Zechariah and chapter 4, उसका चौथा अध्याय and verse 10, 10वां वचन. Maybe we'll read verse 9 and 10. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hand shall also finish it. And thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto you. For who hath despised the day of small things? For they shall rejoice and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel, with those seven, they are the eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth. Turn again with me to the book of Haggai. Haggai की पुस्तक and chapter 2, दूसरा अध्याय and verse 3, तीसरा वचन. Who is left among you that saw this house in her first glory? And how do you see it now? Is it not in your eyes in comparison of it as nothing? One more scripture, the book of Malachi, की पुस्तक and chapter 3, तीसरा अध्याय, verse 16 and 17, 16 और 17 वचन. Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord, and that thought upon his name. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels. And I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. In these three scripture portions that we read, और इन वचनों को जो हमने पढ़े, तीन वचनों को, there are several precious expressions here. यहाँ पर बहुत ही बहुमूल्य अभिव्यक्ति हैं. It says here in Zechariah 4:10, specific word that I want to bring about is, for who hath despised the day of small things? और इसमें ज़करिया की पुस्तक चौथा अध्याय में 10वां वचन, कि किसने इन छोटी चीजों को ताकीर की है? Who had despised the day of small things? और किसने तुच्छ जाना है उस दिन को जो छोटी वस्तुओं का है? This is a very important matter for God's people who are pressing on to God's highest in these days. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है परमेश्वर के लोगों के लिए जो परमेश्वर की उच्चतम वस्तुओं की ओर बढ़ रहे हैं. This is one matter, और ये एक विषय है among many matters, बहुत से मामलों में, concerning which it is necessary for us to be very clear in our hearts. और जिसके विषय में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि अपने हृदयों में हम बिल्कुल साफ रहें. There are many matters, बहुत से मामले हैं, but this is one matter among many. परंतु बहुत से मामलों में ये एक मामला है concerning which we must be very clear in our hearts.
और जिसके विषय में हमने अपने हृदय में बहुत ही स्पष्ट रहना है. Not only have it clear in our hearts, but also thus settle or adjust our mentalities. और न केवल अपने हृदयों में हम साफ रहें, परंतु अपने विचार धारणाओं में भी हम सही रहें. Who has despised the day of small things? और किसने छोटी वस्तुओं के दिन को तुच्छ जाना है? Who has despised the day of small beginnings, in other words? और दूसरे शब्दों में किसने छोटी शुरुआतों को तुच्छ जाना है? You know, it is so necessary for us to take time to ponder over even certain things of this nature. And I'm sure it will help us to adjust ourselves, our mentalities, that we may progress on into the destiny unto which God has called us. और हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि छोटी छोटी वस्तुएं या शुरुआत को हम बहुत ही स्पष्ट देखें और ध्यान करें, ताकि परमेश्वर ने जिन चीजों के लिए हमें बुलाया है हम उसमें आगे बढ़ सकें. You know, when we look at the natural world and see some examples for that matter, और जब हम प्राकृतिक संसार को देखते हैं, कुछ उदाहरणों को देखने के we see that whether it's an aircraft, हम देखते हैं चाहे वो वायुयान हो or it's a ship, या कोई समुद्री पोत हो, or it's even a vehicle, और या कोई वाहन हो, गाड़ी हो. you know, after it has been in use for a long journey, और जब उसको प्रयोग किया गया उसका बहुत लंबी यात्राओं को करने के लिए, then we see that they are taken into a place. तो हम देखते हैं उनको एक स्थान में ले जाया जाता है. There things have to be adjusted back again. और जहाँ पर ये चीजों को फिर से सही ढंग से एडजस्ट किया जाता है. I've heard and I've read. और हमने सुना है और पढ़ा भी है. For example, the ships that go for long travels. और उदाहरण के रूप में वो पानी के जहाज जो कि बहुत लंबी यात्राओं पर चलते हैं. You know, and then after a long voyage, और एक लंबी यात्रा करने के पश्चात, when it is brought into the shore or anchored at the harbor, और जब कि उसको बंदरगाह पर लाया जाता है, किनारे पर लाया जाता है, you know, they go through many adjustments. तो उनकी बहुत सी एडजस्टमेंट्स की जाती है. One of the things that are being adjusted is the compass that has to be adjusted, which would take them in different directions. और एक चीज जो वस्तुओं में होती है वो कैंपस है, जो कि जहाजों को सही दिशा दिखाता है, उसकी देखरेख की जाती है. And it says that it is so necessary that this is truly calibrated again or adjusted. और कहा जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि उसको फिर से सही ढंग से एडजस्ट कर दिया जाए. You know why this adjustment is necessary? और ये सब एडजस्टमेंट्स जो है, why this compass has to be adjusted back again? और कंपास को फिर से सही सुधार क्यों किया जाता है? Because of interferences. क्योंकि उसमें दखल अंदाजी होती है and variations. और बहुत से अंतर फर्क आ जाते हैं. And it is necessary if they have to further travel on into their destiny. और उनके लिए इन सब मरम्मतों को करना आवश्यक होता है इससे पहले कि वो अपनी आगे की यात्राओं को करें. And I sense and feel it is so necessary even in our spiritual journeys into which we are in our lives. और मैं महसूस करता हूँ कि हमारी आत्मिक यात्रा जिसमें हम हैं उसमें भी ऐसी चीजों को करना It becomes necessary for us. और हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है. You know, from time to time to stop and think again over the things that God wants to meditate and ponder over. कि हम रुक कर विचार विमर्श करें उन वस्तुओं के ऊपर जो कि परमेश्वर ने हमें दी है कि हम उनको देखें. I'm sure you will fully agree with me that in our spiritual voyage there are many interferences. और मेरा पूरा विश्वास है और आप मेरे साथ सहमत होंगे कि हमारे आत्मिक यात्रा के अंदर बहुत से अंतर हैं. And we know that there are many interferences and variations which
which affects our voyage. और बहुत सी दखल अंदाजियां उसमें हो गई हैं और उसमें अंतर आ गए हैं जिस पर कि हमारी यात्रा पर प्रभाव पड़ता And है। our spiritual compass has to be adjusted. और हमारा आत्मिक कंपस जो है उसको भी सही करना होता है। You know, many times we know certain things, of course. और हम बहुत सी चीजों को जानते हैं, परंतु We know we are called to be a glorious church. और हम जानते हैं कि हम बुलाए गए हैं कि We are called to be the remnant of God. और परमेश्वर के शेष लोग बनने के लिए बुलाए गए। We are called to be, to be with Him in His kingdom. और हम बुलाए गए हैं कि हम उसके राज्य में उसके साथ हों। He is coming for His glorious bride, and we are called to be part of that. और वो एक महिमा युक्त दुल्हन के लिए आ रहा है और हम बुलाए गए While हैं कि these उसमें things हमारा पास are हो। true and we know, और जबकि ये सब बातें सच्ची हैं और हम जानते हैं, you know, various interferences in our spiritual voyage. और हमारी इस आत्मिक यात्रा में बहुत से दखल अंदाजियां की गई हैं You know, because of variations और बहुत से अंतर हैं and many other things that come in, और बहुत सी वस्तुएं जो कि इसमें अंदर आ चुकी हैं। you know, we need to take time और हमें चाहिए कि हम समय लें and we need to adjust and bring things into alignment time and time again. और हमें चाहिए कि वस्तुओं को समय समय पर हम बिल्कुल सही दिशा में ले आए। You know, think over those very concepts, those very truths. और वो विचार और सच्चाइयां जो कि हमें बतलाई गई हैं उनके विषय में विचार विमर्श To करें get our minds corrected, ताकि हम अपने मनों को सुधार सकें, to get our mentalities, which is out of alignment, brought again into alignment. और हमारी विचारधारणाएं जो कि बाहर आ चुकी हैं उनको फिर से सही दिशा में You know, ले we can just go on talking as a matter of a subject. और एक विषय को लेकर हम बोल सकते हैं और बोलते चले जा सकते हैं बहुत सी बातों के Because we know that that's what we believe in. और क्योंकि हम उनको जानते हैं और वही हमारा विश्वास होता है, But that is not enough. परंतु उतना काफी नहीं। While that is true as a matter of doctrine and principle, the reality may be totally different in our और lives. जबकि वो बात सच्ची हो सकती है शिक्षा के रूप में या नियम के रूप में, फिर भी हमारे जीवनों में आवश्यकता सुधार So की होती the है। mentality has to be adjusted. और हमारी विचारधारणाएं जो हैं उनको हमने सही करना Our है minds need to be corrected. और हमारे मन जो है उनका सुधार होना आवश्यक है। And our lives, our mentalities and ideas, all these have to be freed from these influences which come into our lives over a period of time. हमारे जीवनों के अंदर समय समय पर ये सारे प्रभाव जो प्रवेश कर देते हैं उनको निकालने के लिए हमारा सुधार And करना आवश्यक है। upset this balance in our lives. और ये संतुलन जो हमारे जीवन का होता है उसे जो आकर बिगाड़ देते हैं You know, which disturb the equilibrium in our lives. और जो कि उस संतुलन को बिगाड़ देता है जो हमारे जीवन का है। So it is necessary. इसलिए ये आवश्यक है And bring us into a right appreciation of God's word and His principle in our lives. और हमें लाए परमेश्वर के वचन और उसके नियमों को में सही ढंग से हमारे जीवनों में। Yes. Now we know many times that the remnant of God is a small number. और हम जानते हैं कि परमेश्वर के शेष लोग जो हैं वो संख्या में छोटे हैं। We all know that. हम सब इसको जानते And हैं। yet, और फिर भी when you still remain small, और जब वो और भी छोटे होते जाता है the question is that why are we small? तो प्रश्न ये उठता है कि हमारी संख्या छोटी क्यों है। You know, so we see that though we know it. और यद्यपि हम इसको जानते हैं You know, we are living in a world of a different mentality. और हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जिनकी विचारधारणाएं विभिन्न हैं। So as I said, there are variations, और जैसे मैंने कहा कि वहाँ there are बहुत अंतर है interferences और बहुत दखल अंदाजी है which affect our balances, और जो कि हमारे संतुलन को बिगाड़ देती है, प्रभाव our डालती है। equilibrium, और हमारा जो संतुलन our होता है gravity. और हमारा जो All these things go out of
its original alignment. और हमारी ग्रेविटी जो है वो सब चीज अपने सही दिशा से So बिगड़ we जाती है। thank God for His Word, तो हम परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद that करते हैं God brings us to a place that we may stop and meditate and think over again. कि परमेश्वर हमें एक ऐसे सामने लाता है जहाँ पर हम रुक कर फिर से अपने जीवन के पर विचार विमर्श कर सकते हैं। Yes. This is necessary. ये बहुत ही आवश्यक I है। realized the other day और दूसरे दिन मेरे को पता है, मैं जानता हूँ that the shock absorbers of my vehicle is gone. कि मेरी गाड़ी के जो शॉक ऑब्जर्वर थे वो खत्म हो How गए। did I know this? और ये मैंने कैसे जाना? The front left wheel was wearing out very badly. क्योंकि आगे के जो पहिए थे वो बहुत बुरी तरह घिस रहे थे And behind also there was a problem with the tire. और पीछे भी टायर के साथ एक समस्या थी। And when I took it, और जब मैं इसे ले गया they said, sir, you are into trouble. और उन्होंने कहा कि आपको परेशानी है गाड़ी की। And the language in Delhi said, chalega saab, और दिल्ली की भाषा है कि अब गाड़ी चलेगा. So if I go by that verdict, और यदि मैं उन शब्दों के अनुसार मैं I am चलूं, going to incur greater loss. तो मेरे को और भी अधिक हानि हो सकती And I है can get into many difficulties. और मैं बहुत सी कठिनाइयों में फंस सकता हूँ। So when they finally looked up into it, और जब उन्होंने उसकी जांच पड़ताल सही कर those दी shock absorbers are gone, और दो जो शॉक अब्जॉर्वर थे गाड़ी the के वो suspension is bad, और सस्पेंशन खराब हो गया था and the spring leaf is broken at the back. और जो कमानी का एक पत्ता था वो भी टूट चुका था। It had to be done. तो इसकी मरम्मत करनी थी। And many times what happens in our spiritual life is, और बहुत सी बार हमारे आत्मिक जीवन में क्या होता है, we are like the Delhi mentality, chalega. और हम दिल्ली की जो विचारधारणा है उसी में चलते Our हैं। spiritual vehicle goes without spring leaves and shock absorbers, everything. और हमारे It's just going on. वाहन जो है उसके पुर्जे टूट चुके होते हैं, फिर भी हम उसको ये कह करके चलेगा और बोल रहे praise the Lord, जा रहे हैं. But you know that it's not going to be very pleasant at the end. परंतु आप जानते हैं कि इसका अंत जो है वो सही नहीं होगा। You know, and the mentality is as long as it goes, let it go. और That's not good. और हम सोचते हैं कि जब तक गाड़ी चल रही है चलने दो, वो अच्छा नहीं है। It's going to put you into greater trouble later. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God,
my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like